ये लंबे बाल हैं, ये लड़का है, इसके लंबे बाल क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर एक लड़का है तो लंबे बाल नहीं रख सकता। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी लड़कियों से प्यारे बाल हैं? भाई क्या मेरी गलती है? मुझिया लौट सौखियां नहीं, एक तो सारा दिन जिम्मेदार काम कर देना। कहीं पर जाता हूँ ना, लोग ये कोई सेल्फी वाले होते हैं, कोई सेल्फियां लेते हैं। अगर मैं कहीं से गुजरा तो ए वीरे ओ जा रही, ए वीरे मेरी ओ चीज, ये रिएक्शन, ये तब्दीली आई है। The TikTok app has swept across Pakistan, bringing fame to some unlikely individuals with followers numbering in their millions. Seeing the content on these apps like TikTok doesn't match with the image that the establishment has of itself as a country, as an Islamic country, as a religious country that kind of is increasingly injecting religion into all aspects of life. लेकिन बैन कर देना, ये एकदम से किसी चीज़ को हटा लेना, ये एक तरीका नहीं था और एक गुड वे नहीं था। TikTok's dance challenges and lip-syncing videos are all the craze throughout the world, especially with young people. TikTok has exploded in Pakistan over the last year, overtaking other social media forms like Instagram and Facebook, with now over 20 million users. That's around 10% of the country's population. टिकटॉक वैसे तो अभी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पहले लोग सिर्फ वीडियो देखते थे, दूसरों की स्क्रॉलिंग करते रहते थे, वीडियो देखते रहते थे। अभी बहुत ज़्यादा यूज़र बढ़ रहे हैं। अब ये है कि मेरा बाहर जाना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे जाओ वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बस जाया नहीं जाता कहीं, तो मैंने तो कहीं जाना ही बंद कर दिया इसी वजह से। और ये जितना भी पैसा कंपनीज की तरफ से आ रहा है, या मैं जिन जिन कंपनियों के साथ मुंसलिक होकर काम कर रही हूँ, या जिन जिन कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, या जिनकी प्रमोशन करती हूँ, प्रमोशंस के लिए लोग हमें लाखों रुपए देते हैं कि आप हमारे ये चीज़ अपने अकाउंट से वो कर लें, प्रमोट कर लें हम आपको। तो ये सब आपको टिकटॉक ही की वजह से मिल रहे हैं। Unlike Facebook to a certain extent, and unlike Twitter, you don't have to be literate in order to use those apps. It's expression through video. It's very easy to navigate. And internet is much cheaper than it used to be. So you have a population that suddenly has access to tools to be able to communicate with each other in this sort of unprecedented way. And that has a far greater impact and sort of consequence for a government that maintains its control by keeping the status quo, especially when it comes to information. So, if TikTok has proven to be so popular amongst Pakistanis, why did the government ban the app in October 2020? आके देखिए, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, लाइक मैं कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है, कि मैं इस तरह का काम तो नहीं कर रहा है, कि खून तो नहीं कर रहा किसी का जो इतना मसला हो। जो ये काम है वो चीजें रोकनी चाहिए, बट मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि इसको रोका जाए। मेरी नेचर है, मुझे मस्ती वाली मेरी नेचर है, मैं जरा मस्त रहता हूँ, हर टाइम खुश रहता हूँ, इसलिए मैं जो ना ऐसे करता रहता हूँ, गाने शाने लगा के और मूव्स ये वो सब बस। Alex's saucy lip-sync videos and his enviable hair have landed him with 2.8 million followers. But his popularity does not shield him from criticism from Pakistani society, which is largely conservative and patriarchal. अब जो एक एक्टर होता है वो भी तो एक्टिंग करता है, वो चाहे लड़के की करे या लड़की की करे, उसने तो एक्ट करना है, तो आप उसको ऐसे एक्ट क्यों नहीं देखते? These sort of things were perhaps happening in private, were happening in sort of siloed aspects of society. But now that everybody has access to a smartphone and a camera and the internet, then that sort of expression is available for anyone to see, and that, I think, brings a lot of discomfort for a lot of people who hadn't seen that before. In Pakistan, a large percentage of TikTokers are from rural and working class communities, whereas other social media apps like Instagram and Twitter cater to the urban population who are proficient in English. मेरा शुरू से यही इरादा था कि जो मेरा विलेज है ना, मैं उसको प्रमोट करना चाहता था, उसको जो सीन वगैरह अच्छे मुझे सीन लगते थे, मैं वो दिखाना चाहता था। ए वीरे मेरी गाय ए वीरे ट्रैक्टर है, आज वीरे दूध डंगा दे पट्टे बनाने ना। खास तौर में इंडिया के जो है ना सिख बिरादरी है, वो बहुत ज्यादा इस चीज को पसंद करते हैं। उन्होंने मेरा साउंड कॉपी किया, जब उन्होंने मेरा साउंड कॉपी किया, इस तरह वो मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, तो लोगों ने फॉलो किया मुझे। फ्रेंड आवर प्राडो इज रेडी, फाइनली बादू एंड मी ट्रैवलिंग। It's exciting because someone like him is uninhibited by those inbuilt like self-censorship that I think a lot of Pakistani celebrities tend to do, and
being open in that sense, being happy to embrace fans from across the border. The risk, in a sense, for authorities is less what they're putting out there, like what type of content. It might not be political at all, but what it's doing is creating these connections across borders that inherently question the narrative that powers that be are putting out in traditional media. In the months leading up to the ban, there were several TikTok challenges that led to fatal injuries and deaths. मैंने यही वीडियो बनाई थी कि जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं कम से कम उनको तो तंग नहीं करना चाहिए, जो गलत वीडियो बना रहे हैं उनके आप अकाउंट बंद करें, टिकटॉक बंद ना करें, यही मेरी राय थी उसके बारे में. Yet the government cited indecency as the main reason behind the ban. अगर टिकटॉक एक बेहयाई का जरिए है तो फिर बहुत सारे सोशल ऐप ऐसे हैं जहाँ पे बेहयाई है. बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ड्रामे ऐसे हैं, बहुत सारे नेशनल टेलीविजन पे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहाँ जो बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं. तो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी की वजह से करे तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन एक बेहयाई वाली चीज़ को ठोस और मेन कोई रीज़न ही समझ नहीं आ रहा. One of the most famous TikTok stars in Pakistan, Harim Shah, is known for her audacious videos in which she calls out men in power for their hypocrisy. Some of the most controversial amongst them feature established religious figures behaving in a sexually inappropriate manner. जी मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह. आप जरा ज़बान निकालो. लोग कहते हैं ये मुफ्ती कर रहे हैं, ये मौलवी कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को एक्सपोज करना अपना एक फर्ज समझा. Harim used her celebrity status to get to the Mufti onto a talk show in Karachi in order to expose him and his hypocrisy. इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ. With millions of followers, Harim's TikTok videos are certainly not what would be considered appropriate for a young Pakistani woman. People like her have a following that's huge. The impact of that sort of public criticism and mocking can be, again, quite intense in a different way than if it were on a platform that only educated people in Pakistan were seeing, that only, upper classes, literate classes were seeing. लोग अक्सर कहते थे कि पेंडू है, ये पेंडू है. वो मैं उनको बताना चाहता कि पेंडू इस तरह के भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और जो अनपढ़ भी होते हैं. When we started seeing TikTok memes that were making fun of the prime minister for his coronavirus response, that's an average person. That's a shopkeeper, that's a laborer, that's somebody who lives in rural parts of the country. That's far more dangerous than a group of sort of intellectual leftists reading, anti-prime minister stuff on Twitter. हम वेल एजुकेटेड भी थे, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल भी गई थी, लेकिन कुछ लोगों का सहारा था टिकटॉक. उनके लिए मैंने आवाज़ बुलंद की और बाकायदा मैंने प्रॉपर तरीके से एक कैंपेन चलाया. पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करते हैं. तो मेरे ख्याल में ये बेहयाई वाली बात जो है ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है और इस पे मैं ज़रूर जोर दूँगी और इस बात को मैं बारहा लोगों के सामने, अवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखूँगी कि ये कोई मेजर रीज़न नहीं. A country like China is willing to meet with a country like Pakistan and say, how can we help you make this app sensitized and cleaned in a way that you would like it to be? Because for them, it's not about freedom of expression. It's like, let's cater to the needs of this country and to this kind of authority and still reach our bases. Then, after 10 days, the ban was lifted. It probably felt good to be able to campaign and then see at the end of that the ban was lifted. But for a country like Pakistan that is so heavily reliant at this point on China, embarrassing them on a public stage like that couldn't have been received well, in my opinion. So I think that has far greater consequences. Has probably had a lot more to do with the sudden U-turn, as you said, than like any hashtag campaign did. जब टिकटॉक बैन हुआ था तब वो VPN से लोग यूज कर रहे थे. 1-2 वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन जब टिकटॉक अनबैन हुए फिर दोबारा से वही शुरू कर दी मैं. There's a sort of golden window of opportunity in a way, like where people who didn't have access to platforms of expression can use them and feel safe while using them. But as the pool of users expands,
as the platform expands, the same scrutiny that, our society applies to people like that in real life carries online too.